Hello everyone, how are you all? Now, this is our Mission 100. In the Mission 100, previously we discussed about some important question answers of class 8 science subject. Now here, we discuss important question answers, MCQ, fill-ups, very short, long. इसके अंदर आप लोगों के मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. दीज आर द MCQ. ये हमारे MCQ क्वेश्चन आंसर्स हैं. नाउ द फर्स्ट MCQ इज द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट इज. The place of living of an organism in environment is habitat, home, forest या biosphere. So what is the right answer? Habitat. This is the right answer. Now, the next question. The term soil erosion means increasing the amount of soil, decreasing the amount of soil, removal of top fertile layer of soil, removal of top sterile layer of soil. Yes, Rakshita, what is the answer? Removal of top fertile layer of soil. This is the right answer. Now, the next question. Purpose of deforestation are procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture or using as fuel, या all of these. So what is the right answer? The right answer is option D, all of these. Now, the next question. The plants and animals found in a particular area are respectively termed as flora and fauna, flora and fauna, aura and canna, fauna and flora. तो व्हाट इज द आंसर? देखो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन है. द ऑप्शन ए इज फ्लोरा एंड फौना एंड द ऑप्शन डी इज फौना एंड फ्लोरा. तो यहाँ पर आपको देखना है द फर्स्ट इज प्लांट्स. यहाँ पे आपके फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स के लिए हम यूज में लेते हैं फ्लोरा और एनिमल्स के लिए हम यूज में लेते हैं फौना. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, फ्लोरा एंड fauna. This is the right answer. Now, the next question is, which of the following human activities does not disturb the biodiversity? क्या बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं करती है? Poaching, deforestation, industrialization, using flower leaves for making medicines. So what is the right answer? Option D. This is the right answer. Now, the next is species which are restricted only to a specific area and not in any other geographical area are called endangered, extinct, endemic, या none of these. Yes, girl, stand up. What is the right answer? Endemic species. So what is the right answer? Option C, endemic species. This is the right answer. Now, the next question is, the species which have been lost forever are called rare species, endangered species, enhanced species, या all of these. So what is the right answer? Option D. This is the right answer. Now, the next is, dinosaurs are endangered species है, endemic species है, vulnerable species है या extinct species है? So this is the extinct species. So what is the right answer? Option D. The next question is, a tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding या budding. So what is the right answer? Metamorphosis. Yes, the number of nuclei present in a zygote is none, 1, 2 और 4. कितने होते हैं zygote में?
This is the one. Option B. Which of the following is a oviparous animal? Frog, lizard, hen, या all of the above? Yes, Tushar, stand up. What is the right answer? All of the above. So what is the right answer? Option D. Which of the following is not a viviparous animal? Human, hen, dog या cow? What is the right answer? Yes, Shubham, stand up. What is the right answer? Hen. क्या है? Hen. The animal which has the biggest egg is frog, human, hen या ostrich? Yes, Rajveer. What is the right answer? Stand up. Now, the next question is asexual reproduction through budding occurs in amoeba, paramecium, yeast and plasmodium. Yes, Shagun. What is the right answer? Yeast. The animals that produce new young ones are called. Stand up, Rajveer. Oviparous, viviparous, both A and B, none of these. So what is the right answer? Viviparous. The next is Hydra reproduces by fragmentation, budding, spore formation, binary fission. What is the right answer? Budding. Which one is not the part of female reproductive organ? Ovary, uterus, oviduct and sperm. Sperm. So what is the right answer? Sperm. Frogs undergo while developing as an adult internal fertilization, metamorphosis, fertilization, या none of these. Yes, Anisha. What is the right answer? Metamorphosis. तो frog कैसे develop होता है? Through the metamorphosis. After fertilization, the human embryo grows inside the fallopian tube, vagina, ovary, या uterus. What is the right answer? Uterus. Now, the next question. The color of the frog eggs is black, blue, red and purple. What is the right answer? Black. Tadpole is the developing stage of dogs, cats, frogs या human. What is the right answer? Frogs. The drastic changes that transform a larva into an adult is called कि जिसके अंदर लार्वा किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडल्ट में. तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, मेटामॉर्फोसिस, बडिंग या एक्सटर्नल fertilization. So this is known as the metamorphosis. Which one of the following is not the oviparous animal? Cow, frog, lizard या butterfly? So what is the right answer? Cow. Rajveer, come here. Come here. Yes, now the next question. Adolescence is the period of 5 to 10 years, 11 to 19 years, 22 to 28 years, 30 to 40 years. तो यहाँ पर आपको बताना है adolescence is the period of. So what is the period? 11 to 19 years. Facial hair in boys is called secondary sexual characteristics, adolescence, puberty, none of these. So what is the right answer? Secondary sexual
characteristics. Now, the next is which hormone is secreted by adrenal gland? Adrenaline, insulin, testosterone या estrogen. So what is the right answer? Adrenaline. Lack of thyroxine causes. यहाँ पर आपको बताना है lack of thyroxine causes. Thyroxine, this is the hormone which is secreted by. Yes, Kirti, stand up. Thyroxine hormone secreted by which gland? Thyroid gland. Very good. Thyroxine hormone which is secreted by the thyroid gland. अब यहाँ पर आपको बताना है lack of thyroxine. Lack of thyroxine से क्या होगा? Anemia, goiter, scurvy या osteoporosis. What is the right answer? Goiter disease. Okay. तो lack of thyroxine क्या cause करेगी? Goiter disease. Now, the next is which of the following is added to salt to make it iodized? कि कौन सी चीज which of the following is added ऐड की जाती है कि जिसको salt to make it iodized, salt को iodized salt बनाने के लिए iodine chloride, iodine pentoxide, magnesium iodide, potassium iodide. So what is the right answer? Potassium iodide. Okay. So due to the potassium iodide, जो salt है, salt is the iodized salt. Now the next is 1 kilogram weight is 98 Newton, 9.8 Newton, 0.98 Newton या 0.098 Newton. This is the 9.8 Newton. Yes. The next question is force can affect the state of motion of body by changing. कि क्या है? Force can affect the state of motion of body by changing direction of or speed, increasing speed, state of position या force of friction. So what is the right answer? Increasing speed. तो क्या करेगा? Speed को increase. The SI unit of force is. Yes, Varun, stand up. What is the SI unit of force is? Pascal, meter, Newton या second? Newton. This is the right answer. जो SI unit है force की, what is the SI unit of force? This is the Newton. Force can be measured by its longitudinal force, magnitude, weight या फिर mass. तो force can be measured by its magnitude. तो force को हम कैसे measure करते हैं? By its magnitude. Which of the following is not a direct application of air pressure? Using a straw to suck up fruit juice, using a syringe to draw blood for pathologic test, using a dropper to fill in ink, using a funnel to pour a liquid. तो यहाँ पर आपको बताना है is not a direct application of air pressure. Air pressure की direct application नहीं है. तो what is the answer? Using a funnel to pour a liquid. कि अदरवाइज अगर हम किसी के अंदर भी अगर हम स्ट्रॉ ले रहे हैं, सिरिंज ले रहे हैं या ड्रॉपर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है? एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ओनली ऑन कि यहाँ पर हम फनल को यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर एयर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. Now the next question. Which of the following cannot be charged easily by friction? A plastic scale, a copper rod, an inflated balloon या a woolen cloth. So what is the right answer? A copper rod. This is the right answer. The two charged glass rods will repel each other, attract each other, sometimes repels and sometimes attract each other, या none of the above. So what is the right answer? Repel each other.
क्योंकि जो टू चार्ज क्लासेस है दे हैव सेम चार्ज एंड सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर. The next is a charged glass rod and a charged ebonite rod will attract each other, repel each other, neither attract nor repel, both A and B. So both are attract to each other क्योंकि यहाँ पर charged glass rod और जो ebonite rod है both have different charges and different charges attract to each other. Now the next is friction is contact force, non-contact force, magnetic force या electric force. This is the contact force when two objects contact to each other. तो उसका एक एग्जांपल रहेगा आपका frictional force. The substance is always rough agent, frictional agent, lubricants या paints. तो these are the rough agent. Now, friction always oppose the motion, helps the motion, both A and B या none of these. Friction क्या करता है हमेशा always oppose the motion. Ball bearing are used to convert static friction into किसमें use में आता है? Sliding friction, drag, rolling friction या none of these. So what is the right answer? Rolling friction. Sliding friction is than the static friction. Same, more, less depends upon the force applied. Yes, Gayatri. What is the right answer? Less. Less than the static friction. Friction due to fluids is called. जो friction है किसके थ्रू लग रहा है? Due to fluid is called. Yes, Vedansh, stand up. What is the right answer? Drag, force, pressure या friction. What is the right answer? Drag. Now, the next is the substance which reduce friction are called. जो friction को reduce करते हैं lubricants, friction, streamline या फिर drag. So these are known as the lubricant. Which is not used as lubricant. किसे हम एज अ लुब्रिकेंट यूज में नहीं लेते? ग्रीस, ग्रेफाइट, सोप सॉल्यूशन या स्मूथ सरफेस. तो यहां पर आपके हैं विच इज नॉट यूज एज अ लुब्रिकेंट. तो ग्रीस. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एयर, पाउडर, रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस. रफ सरफेस. फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ड्यू टू द rough surface. Force of friction depends on inclination of surface, smoothness of surface, roughness of surface या all of the above. So what is the right answer? All of the above. Which of the following is not a factor which affect friction? Mass of the body, nature of the surface in contact, area of contact, roughness of the surface on which the body moves. So what is the right answer? Area of contact. Frequency of ultrasound waves is more than 20,000 hertz, more than 2,000 hertz, less than 20 hertz या less than 200 hertz. So what is the right answer? More than 20,000 hertz. Now, these are the fill in the blanks. Now, the first fill in the blank is female gametes are called. Female gametes को हम क्या कहते हैं? What is the right answer? Yes, Varun, stand up. What is the right answer? Yes, ovum. क्या होगा हमारा?
ओवम, या फिर हम ओवा भी लिख सकते हैं. It is important to eat and maintain personal hygiene during adolescence. Yes, Bhavya, stand up. What is the right answer? Yes, what is the right answer? Yes, this is the balanced food. Now, the next is children gain heights during किस प्यूबर्टी या फिर हम एडोल्सन भी कह सकते हैं. एडोल्सन टाइम पीरियड में भी हो सकता है. Now, the next is of the unborn child depends on whether the zygote has XX or XY chromosome. तो यहां पर होगा the sex of the unborn child depends on whether the zygote has XX or XY chromosome. तो वो अगर XX और XY क्रोमोसोम ही डिपेंड करेंगे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो यहां पर आंसर आएगा आपका sex of the unborn child. Now, the next is hormone or secretion. Hormones किसके secretion होते हैं? The hormones are secretion of which gland? Yes, Kirti, stand up. What is the right answer? Endocrine glands. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? Endocrine. Testosterone is the hormone of. Yes, Parul, stand up. Male hormone. To draw water from a well, we have to add the rope. हमें क्या करना पड़ता है? क्या अप्लाई करेंगे हम? कि फोर्स. तो we have to apply force. Now the next question is to move a loaded trolley we have to. अगर हमें उसे मूव कराना है तो हम क्या करेंगे? पुल या पुश. The north pole of a magnet, the north pole of another magnet. कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल. यस रक्षिता, स्टैंड अप. व्हाट इज द राइट आंसर? रिपेल. Repels the north pole of the another magnet. An object with another object result in a force between the two objects. क्या है कि an object with another object, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगेगा? इंट्रैक्शन फोर्स. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? an object interaction with another object result in a force between the two objects. Now, force acting on per unit area is called. What is the answer? Yes. Anup, stand up. What is the right answer? Pressure. What is the right answer? Pressure. Friction opposes between the surface in contact with each other. Yes. Harshit. Yes. Relative motion between the surface in contact to each other. Now the next is friction produce. Friction क्या produce करता है? Yes, Harshit, stand up. Heat. Very good. Sliding friction is than the static friction. Less.
Sliding friction is less than the static friction. Friction can never be entirely eliminated. रफ सरफेस प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन. रफ सरफेस क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, मोर या लेस? मोर. रफ सरफेस प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन. स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस फ्रिक्शन देन द रफ सरफेस, लेस. The friction always the direction of the motion oppose, direct oppose the motion. Bhavya, sit properly. Time taken by an object to complete one oscillation is called, कि जो यहाँ पर है हमारा the time taken by an object complete, this is the time period. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की. तो what is the right answer? Time period. The unit of frequency is hertz. Shrillness of sound is determined by the of vibration frequency. Frequency of vibration. Sound travels in steel than water. तो यहाँ पर अगर हम साउंड की बात करें, किस में ज्यादा ट्रेवल करेगी, स्टील में कि वाटर में? स्टील में. तो साउंड ट्रेवल्स फास्टर in steel than water. Okay, now the next question is, the loudness of sound is determined by the of vibration. Yes, girl, stand up. What is the right answer? The loudness of sound is determined by the of vibration. Yes, amplitude. This is the right answer. Above the noise becomes physically painful. कितनी? 80 डेसिबल से above. The noise becomes physically painful. Vibration is a repeated and motion. Vibration क्या है? This is the repeated. Yes, Tushar, stand up. What is the right answer? Yes, to and fro motion. Sound is produced when objects vibrate. Sound cannot travel in. किसमें travel नहीं करती? Vacuum. Time period of a pendulum which is vibrating at 10 hertz is, कि क्या होगा time period? 1/10 second. 1/10 second. Most liquid that conduct electricity are solution of N. कि किसके solution होते हैं? Acid, base and salt. किसके होते हैं? Acid, base and salt के. The process of depositing a layer of an desired metal or another material by means of electricity is called electroplating. Distilled water is क्या होता है? वेट कंडक्टर या फिर हम इंसुलेटर भी कहते हैं. Now, when salt is dissolved in distilled water,
We obtain salt solution. This solution is of electricity conductor. In electroplating, the object on which electroplating has to be done is made. Electrodes किससे मिलकर बने होते हैं? Negative electrodes. Now, the next is the passage of an electric current through a solution cause. कौन सा इफेक्ट कॉज करता है? Chemical effects. This cause chemical. Some liquids are of electricity and some are. Some are good conductor and some are bad conductor. So some liquids are good conductor or some are bad conductor. Metals such as copper and aluminium are of electricity, good conductor. An electric lamp glow due to the effect of electric current. This is the heating effect. Heating effect of electric current. The electric charge generated by rubbing two objects is. The electric charge generated by rubbing two objects is. क्या होगा? This is the इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है जब टू ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दिस इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सीस्मोग्राफ का इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड. सीस्मोग्राफ किसको रिकॉर्ड करता है? सेस्मिक वेव्स को. सेस्मिक वेव्स को. Earthquakes are caused due to the movement of earth plates. किसके मूवमेंट से? अर्थ. Types of charge are gained by rubbing objects. Two types of charge are gained by the rubbing objects. Now, nitrogen fixation occur during. कब होता है? Lightning. Is the sun surest test of charge on a body. कौन सा होता है? This is the repulsion. The power of an earthquake is expressed on a scale are called. This is the Richter scale. The charged balloon, a charged balloon. अगर हम चार्ज बलून को दूसरे चार्ज बलून रिपेल. लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज. किसको फॉलो करती है? अ थंडर. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be away from his image. कितना seems लगता है? 2 meter. 2 meter away. The size of the pupil becomes when you see in dim light. क्या होगा? Size large. Night birds have cones than rod in their eyes. So this is the lesser. Angle of reflection is always equal to the angle of incident. Now these are the true false. Cleaning of forest is called deforestation. This is true or false? True. Iron is hydrogen reactive than copper. True.
A liquid fuel used in homes is LPG. True. The unit of frequency is hertz. True. The term cell was coined by Golgi. This is the false. Sound cannot travel in vacuum. This is the true. Distilled water is insulator. True. Night birds have lesser cones than rods in their eyes. True. A charged balloon repel a charged balloon. True. Sound travels slow in steel than water. This is the false. Sperm is known as the male gamete. True. Cell wall is present in plants only. True. Himanshu, stand up. Plants found in particular area. This is known as the flora. This is known as the flora. Ki plants found in a particular area is known as the flora. Animals found in particular area. This is the fauna. The species members are diminishing. This is the endangered species. Record of endangered species. Red data book. An area of living and non-living component. This is the ecosystem. Restocking of the destroying trees. Reforestation. The next is low amplitude. Low amplitude is low shrillness. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? C. Music. This is the pleasant sound. Noise. This is the unpleasant sound. Hertz. Unit of frequency. Ektara. This is the stretch string. Eardrum. Thin membrane. Dolak, stretch membrane, and flute. This is the air column. Electroplating. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या होगा? प्रिवेंट रस्टिंग. अ टेस्टर डिटेक्ट द करंट. इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सर्किट a closed electric path. Distilled water. This is the insulator. And copper plates, electrodes. Now these are the very short question answers. यहाँ पर हमने MCQ, fill-ups, true, false और match the column कर लिए. Now we start from very short question answer, then short and long question answer. The first is, which condition is necessary for distracting distillation? Absence of oxygen. What chemical are used in the preparation of matchsticks? Basically इसके अंदर antimony trisulfide and potassium chlorate. This is the important जो हम इसमें use में लेते हैं. Define combustible substance. तो इसके अंदर that can react with oxygen and give out heat and light. This is known as the combustible substance. What is the ignition temperature? The ignition minimum temperature at which substance catches fire. जो fire वो catch कर लेते हैं, this is known as the ignition temperature. Minimum temperature जिस पे. What is explosion? Reaction with large amount of gas formed is called explosion. Charcoal does not burn with flame but glows only. Explain कि charcoal does not burn नहीं होता है, but glows only, हमेशा क्या करता है? Glow करता है. क्यों? क्योंकि charcoal does not burn with flame because it is non-volatile in nature and does not vaporize on burning, so it glow only. तो क्या होगा? Non-volatile है
और क्या है, नॉट वेपोराइज होता है ऑन बर्निंग, बर्निंग पे वेपोराइज नहीं होता, इसलिए ये हमेशा क्या करता है, ग्लो करता है. नाउ व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबुशन is called calorific value. Name two liquid which have low ignition temperature. Ether and alcohol. Name the zone of a candle flame. Innermost zone, middle zone or outermost zone. Write the name of any four endangered species animals. White elephant, lion, white buffalo and Barasinga. What is wildlife sanctuary? क्या है? Area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat are called wildlife sanctuaries. Himanshu, stand up. What is biosphere reserve? Large area of protected land for conservation of wildlife, plants and animals, resources and traditional life of tribals. What are endangered animals? Endangered animals कौन से? Animal whose number are diminishing to a level that might face extinction are known as the endangered animals. Rakshita, stand up. What is the purpose of the Indian Forest Protection Act? The purpose of this act is protect and conserve natural forests. What is Red Data Book? Red Data Book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plants. Name a biosphere reserve of India. Great Nicobar Biosphere Reserve. What causes droughts? Reduced rainfall causes droughts. What does a sanctuary provide? It provides protection and sustainable living condition to wild animals. What is deforestation? It may be defined as the cutting of forest and using that for the other purpose like settlement of the life. What are the consequences of deforestation? तो क्या है? Change in soil properties. It becomes less fertile due to the removal of top layer. And the second is decrease in water holding capacity of the soil. It result in floods. What is the function of biosphere reserve? क्या है? Maintain the biodiversity of the area. Give any two example of the endemic flora and Panchmari Biosphere Reserve. This is the sal and wind mango, wild mango. Define endemic species with suitable example. The animals that are exclusive found in particular area only called endemic species. Define ecosystem. What is ecosystem? It comprises of all the plants and animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river and deltas. What is reforestation? Restocking of destroyed trees by planting more and more new trees. Write an information of Panchmari Biosphere Reserve. Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary. What do you mean by endangered species? Species which are risk to extinction is called endangered species. How many trees can be cut to prepare 1 ton of paper? 24 trees cut. कितने trees cut किए जाते हैं? This is the 74 trees can be cut to prepare.
The right answer is 1717 trees can be cut to prepare 1 ton of paper. What are extinct animals? कौन कौन से हैं? आपको डायनासोर्स बताने हैं. दिस इज द एक्सटिंक्ट एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. Which part of the cell contains organelles? किसके अंदर organelles present होते हैं? This is the cytoplasm. Cytoplasm contains cell organelles. State the difference between eukaryotes and prokaryotes. तो यूकैरियोट्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इन द प्रोकैरियोट. व्हाट इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन स्टडिंग द लिविंग सेल्स? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लिविंग सेल को स्टडी कर सकते हैं. व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? व्हाट अबाउट द देयर शेप एंड साइज? अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज, जिनका फंक्शन भी अलग होता है. अकॉर्डिंग टू फंक्शन उनका शेप और साइज डिफरेंट होता है. व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन बिल्डिंग्स एंड सेल्स? ब्रिक्स इन बिल्डिंग्स एंड सेल्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट. नेम टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम और amoeba. They are also known as the unicellular organism. Which cell is observable with unaided eye? की मतलब हम naked eye से कौन सी सेल को देख सकते हैं? तो this is the biggest cell, this is the ostrich cell. कि ostrich के egg जो है, this is the बिगेस्ट सेल जिसे हम नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है. व्हाट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स? अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बॉडी, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स. तो सबसे पहले क्या होती है? सेल्स. सेल्स से फिर क्या बनते हैं? टिश्यू. टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स. ऑर्गन से बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से आपकी बनेगी बॉडी. तो सबसे पहले क्या है? द मेन बेसिक यूनिट, दिस इज द सेल. व्हाट डू माइटोकॉन्ड्रिया डू इन द सेल? क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर इट्स एक्टिविटीज. प्रोवाइड क्या कराता है? एनर्जी एक्टिविटीज के लिए. विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग? दिस इज द लाइसोसोम. Humans name the cell which can change its shape. White blood cell जो अपना शेप चेंज कर सकती है. Give the range of the cell size 0.1 micrometer. Asexual reproduction. Name to method of asexual reproduction. क्या है asexual reproduction? Single parents उसमें इन्वॉल्व होते हैं. Budding and binary fission. These are the two types of asexual reproduction. Example है. What is hymen in case of vagina? At the official of vagina present thin membrane. Diaphragm called hymen. It is the pre-folate pass of maturation discharge. What do you understand by reproduction? Reproduce mean producing of new organism. This is known as the reproduction. अगर हम किसी new offspring को develop करें, this is known as the reproduction. What is sexual reproduction? जिसके अंदर two gametes मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं. दिस इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स ही क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं. तो दिस इज नोन एज द एसेक्सुअल. नेम द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. क्या किया था? द फर्स्ट मैमल, दिस इज द डॉली. डॉली शिप क्लोन की गई थी. कब की गई थी? 5 जुलाई 1996. In which female reproductive organ does the embryo get embedded? कहाँ पर एम्ब्रियो जाके एम्बेडेड होता है? दिस इज द यूट्रस. यूट्रस में जाके एम्ब्रियो क्या होता है? एम्बेडेड होता है. What are two modes of by which animals reproduce? Sexual or asexual? What is the name of reproduction in which
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, कहां पर होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. व्हाट हैपन व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज, कि कोई भी स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन. What are the female sex cells? This is the ova. Male gamete, the reproductive cell is male are called male gamete. यहाँ पर आ जाएगा आपका sperms. What is zygote? Zygote क्या होता है? जब fusion होता है male and female gametes का, now it convert into zygote. What is fertilization? Fusion of ovum and sperm. How a zygote is changed into an embryo? तो जायगोट क्या होता है? डिवाइड्स होता है रैपिडली, डिवीजन उसमें अकर होता है और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है. व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में क्या होगा कि जब वन सेल डिवाइड होगी टू सेल्स के अंदर, टू डॉटर सेल्स में. ओके, कहाँ होता है? अमीबा के अंदर. बाइनरी फिजन हम किसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं? अमीबा में. एडोल्सन. व्हाट इज एडोल्सन? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आ जाती है. दिस इज नोन एज द एडोल्सन. What bring about changes that make a child grow into an adult? This is the hormones. कौन करता है change? Hormones. Who established the spark and lightning were same thinking? This is the Benjamin Franklin. In human body a conductor or an insulator. अगर हम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ये क्या है? कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? दिस इज द कंडक्टर. What material conduct electricity? कौन से मटेरियल करते हैं? कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं. What is the LED? Light emitting diode. This is the short form. आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है. वेदांश, stand up and sit properly. What are the electrodes? Metal used in electrolytes to make conduct battery called electrodes. When current flow in a wire, a compass needle cap nearly gets deflected. What effect of current is this? This is the magnetic effect. In electroplating, what effect of current is observed? This is the chemical effect. Does pure water conduct electricity? No. और कैसे करेगा? जब हम इसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे. What is the application of chemical effects of electricity in our daily life? क्या है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? कैरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन अकर होती है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. कार पार्ट्स हैं, बाथ टब्स है, किचन गैस बर्नर्स है, बाइसिकल हैंडल्स है, कोई सभी हम इसमें दे सकते हैं. व्हाट इज एन अर्थक्वेक? क्या होता है? सडन श्रिंकिंग एंड ट्रिबलिंग ऑफ द अर्थ. दिस इज नोन एज द अर्थक्वेक. What happened when a plastic refill is rubbed with the polythene? क्या होगा? पॉलीथीन, जो प्लास्टिक रब विद पॉलीथीन, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. उनके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा. व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जनरेट बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट. दिस इज नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर नोन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. नेम द 7 कलर्स ऑफ लाइट. रेड, ऑरेंज, जो हमारे 7 कलर्स होते हैं. नेम वन डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड बाय शॉर्ट सैचुरेटेड पर्सन टू सी ओवर द हेड ऑफ द क्राउड. दिस इज द पेरिस्कोप. नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट चार्ज और नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग? क्या है? लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या करती है? एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से प्रिवेंट करती है. व्हाट आर द सेस्मिक वेव्स? प्रोड्यूस एन अर्थ सरफेस बिकम द
tremors. What is the angle of incident ray? Is the reflected ray is at the angle of 90 degree. This is the 45 degree, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों कैसे हैं? सेम है, इक्वल है. What apparatus is used to verify the law of reflection? यहां पर हम क्या करेंगे? The ray strike apparatus यूज में लेंगे. What is virtual image? जो बिहाइंड होती है प्लेन मिरर के, जो बाद में बनती है, दिस इज नोन एज द virtual image. Now these are the short question answers. यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बताना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के अंदर आपके लैक्टोबैसिलस हेल्प करते हैं. चीज हो गई, पिकल्स हो गई, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं. हाउ आर एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट स्टोर्स? कैसे हम स्टोर कर सकते हैं? तो की फ्रॉम मॉइस्चर, पेस्ट, माइस, माइक्रोस्कोप, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें बचाने के लिए उनको बिग बिग कंटेनर्स में हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. हाउ आर फंगाई यूजफुल टू अस? क्या करता है? प्रोसेसिंग ऑफ चीज, मेकिंग इडली. मशरूम आर यूज्ड एज फूड. प्रोटेक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक जो ब्रेड है, केक है, वाइन, विनेगर, बियर, इन सब के अंदर भी हम फंगाई को यूज में लेते हैं. हाउ कैन द स्पॉइलेज इन फूड बी डिटेक्टेड? कैसे हम जो स्पॉइल फूड है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं? तो उसके ऑर्डर से, सॉरिंग से और गैस फॉर्मेशन से, कि क्या क्या उसमें गैस का फॉर्मेशन हुआ है. In how many categories natural resources are classified? Yes, कीर्ति stand up. किस कैटेगरीज के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं? इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज कोल तार? राइट इट्स इंपॉर्टेंट. कोल तार इज ऑब्टेन इन द प्रोसेसिंग ऑफ कोल. किससे हम ऑब्टेन करते हैं? कोल की प्रोसेसिंग से. इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड है, अनप्लीजेंट स्मेल है, क्लियर है, और इट अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. अब यहां पर बताना है कोलतार की क्या इंपॉर्टेंस है. तो प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज एज अ स्टीयरिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफ मटेरियल. Write the advice given by the Petroleum Conservation Research Association. Save petrol. Drive at constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine and traffic lights. Place where you have to wait. Ensure correct tire pressure. ये सब हमें ensure करना चाहिए. What gas is produced when coal is heated in air? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? This is the carbon dioxide. Explain the process of formation of petroleum. क्या है कि petroleum occurs deep down in earth between the layers, non-porous rock. काफी ओवर मिलियन ईयर्स लग जाते हैं जब पेट्रोलियम बनता है. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? लिमिटिंग क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, और ये आपके ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू डिस्ट्रॉय, कई बार कि इसके अंदर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व होती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि ये लिमिटिंग क्वांटिटी में होते हैं. व्हाट आर द यूज ऑफ बिटुमिन, पैराफिन, वैक्स एंड लुब्रिकेंट? तो क्या है? बिटुमिन का हम यूज करते हैं रोड सेफ्टी सरफेसिंग में, पैराफिन बेस का ऑइलमेंट, कैंडल्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन में. लुब्रिकेंट जो ऑयल है उसका हम यूज में लेते हैं मशीन पार्ट्स के अंदर. विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? तो कौन सी यूज में लेते हैं? आउटर मोस्ट जोन. व्हाट इज द कंपेयर बिटवीन एलपीजी एंड वुड? तो एलपीजी क्या है? नो रेसिड्यूज आफ्टर बर्निंग. यहाँ पे ऐश, काफी सारी ऐश रह जाती है. कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइपलाइंस एंड सिलेंडर. दिस इज ट्रांसपोर्ट थ्रू एलपीजी. बर्न इजीली. यहाँ पे ये कैचेस फायर मोर डिफिकल्टी से फायर कैच करती है.
लो इग्निशन टेम्परेचर है इसका और इसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है। नो स्मोक ऑन बर्निंग, यहाँ पे बर्न विद स्मोक। दिस इज द डायग्राम ऑफ कैंडल। आपको कैंडल का डायग्राम बनाना है, इनर मोस्ट जोन, आउटर जोन और मिडिल जोन। आप इस तरीके से उसको 3 में डिवाइड करके बना सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर? तो वो क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर टू द कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। वहां पर कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस के बीच में एक लेयर बना लेता है जिससे वहां पर एयर पास नहीं हो रही है। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। कैसे रिड्यूस करते हैं? तो द डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल बिकॉज plants, trees and undergoes transpiration, convert the ground water turns into water vapor. What are consequence of deforestation? क्या consequence है? ग्लोबल वार्मिंग आ गई, सॉइल इरोजन आ गया आपका, मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द पोल्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है? न्यूप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूप्लाज्म क्या है? लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म ये कहां पे होता है? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, डेफिनेट शेप देते हैं, प्रोटेक्ट द इनर सेल्स, ऑर्गेनल्स, बाउंडिंग सेल्स, ऑल्सो यहाँ पे आपके रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? राइट इट वेरियस मोड। तो इसके अंदर आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो वुमेन्स बेबी कंसीव नहीं कर सकती तो जहां से रिलीज फ्रेश एग फीमेल से और स्पर्म मेल से लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया कराया जाता है, जिसको बाद में जायगोट में कन्वर्ट होने के बाद उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। What are the basic features and purpose of asexual reproduction? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सेल डिवीजन आर माइटोटिक होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फ्रेगमेंट्स और स्पेशलाइजेशन पार्ट ऑफ द सेल। द नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन ओविडक्ट्स ऑफ वुमन आर ब्लॉक्ड। क्या हो जाता है? अगर ब्लॉक्ड हो जाती है तो वहां पर स्पर्म एग तक नहीं पहुंचता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पर डेवलपमेंट एंड एनिमल जो डाइजेस्टिक चेंजेस होते हैं, लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? वो डायरेक्ट सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर, और एक्सोक्राइन ग्लैंड थ्रू द डक्ट के थ्रू सिक्रीट करती है। हाउ डज बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ? तो कहां से मिलता है? So it is very important to eat kind of food during these growing time period। हम अगर हम प्रॉपर फूड बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। HIV वायरस एंटर ह्यूमन बॉडीज क्या करता है? हाउ डू, कैसे होगा? यहाँ पर कोई भी अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन से सीरीज हम यूज में ले लेते हैं, इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर वो ट्रांसफर हो सकता है। What do you understand by the term chromosome? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। What happen if the force is applied in the direction of the opposite to the motion of the body? तो इसे हम क्या कहेंगे? This is the force applied direction upon the motion। ये क्या करेगा? स्पीड को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और कम इन द स्टैटिक स्टेट, उसको कहां लाएगा? स्टैटिक पोजीशन में। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको बतानी है इसके अंदर किस तरीके से किस तरह से हम हमारी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। हाइट इंक्रीज कैसे होती है एडोल्सन के अंदर, वो आपको बतानी है किस तरह से
ग्रोथ प्यूबर्टी टाइम पीरियड में ही सारी हाइट हम क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड कि किस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड को यूज में ले सकते हैं, लैरिंग्स का डायग्राम है। व्हाट आर द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन द लाउडनेस ऑफ फ्यू साउंड। तो क्या होता है कॉल्ड डेसिबल, किसको हम कहते हैं लाउडनेस एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ डेसिबल। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, किस तरह से इमेज फॉर्म्ड होती है यह आपको बताना है। वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है। डिस्टेंस जो डिस्टेंस मेड फ्रॉम द मिरर इज इक्वल, दोनों इक्वल होती है। पेंसिल और पॉइंट ऑफ अ पॉइंट पे आपको इमेज ड्रॉ करनी है। ये आपको पेंसिल किस तरह से इमेज, और कोई एक पॉइंट है तो उसको आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो किसकी इमेज कैसे ड्रॉ होगी ये आपको बताना है। कैलिडोस्कोप का डायग्राम आपको बताना है, किस तरह से हम कार्डबोर्ड लेके किस तरह से उसके अंदर ज्वाइन करके स्मॉल पीसेस डालेंगे, ये आपको इस तरह से बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से आपकी इनर जोन, ल्यूमिनेंस जोन एंड नॉन ल्यूमिनेंस जोन को आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, बाहर होगा आउटसाइड द बॉडी, और किस तरह से ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, डिस्क्राइब इन डिटेल कि क्या कॉज है। तो जो सेस्मिक वेव्स होती है, जो वॉल्केनो इरप्शन, सेस्मिक वेव्स और जो अर्थ प्लेट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से मूव करती है, अप डाउन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है अर्थक्वेक डेवलप होता है। तो ये पूरा आपको बताना, और किसके थ्रू हम कर सकते हैं, सेस्मिक वेव्स के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉल्ट जोन होता है। ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई कहीं नहीं जाए।